Okay, so today's session is all about listening multiple choice questions and map based questions. We will figure out कि क्या क्या strategies हमें चाहिए multiple choice questions के लिए, what problems do you face in multiple choice questions, and how effective skills are required for map based questions. So we will talk about listening multiple choice questions as well as map based questions. आज हम दो types of questions करने वाले हैं. The very first is multiple choice questions. Any idea about what are multiple choice questions? Yes, please. What you are supposed to do in multiple choice questions? In And multiple choice question, we have given three options. In three options, we have to choose one correct answer. Correct. So that means one major point is the multiple choice questions, they comes with different options. You must be having 3 to 4 options and you have to select the one correct answer, right? But how you are going to select the correct answer? By listening to the recording. This is a listening module. So in listening multiple choice questions, you will be asked to choose one of the 3 possible answers for the given choices. Now, in this session, we will be detailing at this type of question. Now, you need to have skills such as understanding the specific points in detail and ability to grasp an overall idea of main points in the given text to crack the listening test. Now, what happens here is when you listen to the recording, you have to look for specific detail that what speaker is asking and what you have to select here, right? आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको उसको वन टाइम ही मिलने का सुनने का ऑप्शन है, यू कैन नॉट हियर इट अगेन, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट इज रिक्वायर्ड आंसर के लिए उस रिकॉर्डिंग को हियर करना है, एंड यू हैव टू बी लिटिल फोकस ऑल्सो कि वो मेन पॉइंट क्या है, राइट? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? Now, listening multiple choice questions, you will find 4 sorts of questions. For one, you have to choose one of the answer. Second, you have to choose the sentence which completes the later part of the given question. And in third, you need to choose an appropriate picture of the given question. So sometimes listening multiple choice questions, they comes in different types. फर्स्ट वाला कौन सा होता है? शॉर्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेकंड इज सेंटेंस कॉम्प्लीशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. थर्ड वन इज पिक्चर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड द फोर्थ वन इज लिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Let's have a look. Now see, short answer multiple choice question. So short answer multiple choice question is of this type. Can you see on the screen? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एक स्टेटमेंट मिलता है और आपको क्या चूज करना होता है? एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. आप रिकॉर्डिंग को सुनोगे एंड देन साइमल्टेनियसली आप क्या चूज करोगे? एक करेक्ट आंसर चूज करोगे. सो सी द एग्जाम्पल फ्रॉम द होम इंश्योरेंस कोटेशन फॉर्म लिसनिंग आंसर सेक्शन, राइट? नाउ हियर इज the top 2 proposals for the design of the swimming pool were chosen by. So, 2 proposal बोले हैं यहाँ पे. The top 2 proposal for the design of swimming pool were chosen by whom? किसके थ्रू चूज किया गया था? पब्लिक के थ्रू, रेडियो स्टेशन के थ्रू और आर्किटेक्ट के थ्रू. So this is short answer multiple choice questions. जब आपको शॉर्ट आंसर दिया हुआ है और उसमें से आपको क्या करना है? एक आंसर को सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज सेंटेंस कॉम्प्लीशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है? एक स्टेटमेंट दिया जाता है एज अ क्वेश्चन और आपको चूज करना है वन ऑफ द ऑप्शन टू कंप्लीट इट. So basically half of the statement is given and the other half you need to find out. Like the coelacanth was dash. Now the another half of the statement is given as A, B, C. तो जब आप रिकॉर्डिंग को हेयर करोगे यू हैव टू फोकस कि वो अदर हाफ ऑफ द स्टेटमेंट क्या था, राइट? सो दिस इज सेंटेंस कॉम्प्लीशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. थर्ड वन इज पिक्चर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन.
सो इन पिक्चर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. आपको क्वेश्चन मिलेगा, देन पिक्चर्स मिलेंगी. यू नीड टू चूज द राइट पिक्चर. आपको राइट पिक्चर को चूज करना है बाय लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग केयरफुली, राइट. एंड दिस इज समटाइम कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट लिसनिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नहीं दिया, आपको पिक्चर दिया. सो यू हैव टू चूज वन पिक्चर हियर. Fourth one is list multiple choice questions. Now here you will be given a question statement and a list of possible answers. So there will not be only 3 or 4 options, there will be more options. And you have to choose more than one answer option. So this is basically called as multiple choice with multiple answers. Now see the question. What are the 3 locations that Laura, Phil, and me choose for their survey? The town square, the train station, the university cafeteria. So there are options till G. And you have to select 3 correct answers. So this is multiple choice with multiple answers. I hope it is clear. The types of multiple choice questions are clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now let's ma'am. look at some of the common problems which you people face, right? So some of the common problems what you people are facing is that you will most likely hear all of the listed options. होता है ना recording में आपको सारे options सुनाई देते हैं, right? You will hear all of the options जो भी आपकी recording में given है, आपके answers में भी given है. It means if you choose an answer just because it is mentioned in the recording could reduce your marks, right? So ऐसा possible है कि आपके सारे options आपको recording में भी सुनाई दे और आप वही आंसर को सिलेक्ट करो. दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. आपको फोकस करना है ऑन सिलेक्टिंग द राइट आंसर. कीप इन माइंड ऑफ द डिस्ट्रैक्टर्स ऑल्सो, राइट, कि आपको डिस्ट्रैक्टर्स भी मिलेंगे वहां पे. फ्रिक्वेंटली द मीनिंग ऑफ 3 चॉइसेस विल बी सिमिलर, राइट. ये प्रॉब्लम भी आप फेस करते हो कि तीनों के तीनों जो चॉइसेस आपको दी है उनके सारे मीनिंग क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. So you may struggle to identify the difference between them. So आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा आंसर इनकरेक्ट है. So in that case आपको फिगर आउट करना है डिफरेंस बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, कि उनमें से क्या डिफरेंस दिया, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंप्लीट मीनिंग सेम हो, राइट. सम ऑफ द मीनिंग्स विल बी सिमिलर बट नॉट द एंटायर मीनिंग. एंटायर मीनिंग सिमिलर नहीं होगा कभी, राइट. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. यूजुअली जो आंसर्स आपको गिवन होते हैं इन द सिनोनिम्स या पैराफ्रेज फॉर्म में होते हैं वो. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मिलने वाला है अपने ऑप्शंस में. थिंक ऑफ सिनोनिम एंड फ्रेजेस ऑफ द मेन वर्ड्स. जब भी आप रीड करते हो क्वेश्चन को, जस्ट थिंक ऑफ कि इसका क्या सिनोनिम या इसका क्या पैराफ्रेज वर्जन जो है मुझे रिकॉर्डिंग में मिल सकता है जब भी आप आंसर करते हो अपने क्वेश्चंस को. यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लिसनिंग टेस्ट बट यू आर रीडिंग योर क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना. आप यहाँ पे क्या करते हो, अपनी सारी सेंसेस को वर्क कराते हो. यू आर रीडिंग, you are listening also, you are writing also. Everything is here in the listening test. So you have to read and underline the main words in the question. आपको read भी करना है, underline भी करना है अपने main words को question में, and the ability to differentiate one option from the another. और आपको ये भी चेक करना है रीड करते टाइम कि इस ऑप्शन में और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है. दैट मीन्स आपके अंदर आपकी ये स्किल इतनी इंप्रूव होनी चाहिए कि आप तीनों ऑप्शंस को रीड करके उनमें डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन से ऑप्शन में क्या डिफरेंट दिया है, राइट. कॉमन मिस्टेक इन लिसनिंग टू द ऑडियो इज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट. अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जब आप समझ नहीं पाते कि इस ऑडियो का पर्पस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस रिकॉर्डिंग का. सो व्हाइल लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट, कि क्या कन्वे कर रहा है स्पीकर, आपको क्या बता रहा है, राइट, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली. इससे आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे.
Another general mistake जो students करते हैं is leaving the answers blank. Answer, see, there is no negative marking. यहाँ पे कोई negative marking नहीं है. So please do not leave any answer. आप incorrect answer लिखो, but do not leave the blank one. आपको blank answer नहीं छोड़ना. Guess करके भी you can write the answer at the end, but try to write or find the correct answer first. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका miss out हो गया and you are not able to find the answer, then make a guess in the end. Maybe that guess can be correct also, instead of putting the answer as blank. Now, what are the tips? Now, these tips you need to follow because इसके through हम एक exercise भी करेंगे, right? So, very first is highlight the keywords in the question. हमेशा अपने keywords को highlight करो, relate करो उन keywords को to the understanding you got from the listening to the recording. जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है उससे अपने कीवर्ड्स को रिलेट करो, इससे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करने में हेल्प होती है. रीड थ्रू द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को रीड करो, हाईलाइट करा कीवर्ड्स को, अंडरलाइन करा, ऑप्शंस को रीड करो, हाईलाइट करो ऑप्शंस को जो आपको लगता है कि ये सिमिलर है, अंडरस्टैंड करो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कि इस ऑप्शन का क्या मीनिंग है, अनदर ऑप्शन का क्या मीनिंग है, सो दैट यू कैन रिलेट. जो डोंट चूज एन ऑप्शन बाय पिकिंग अप the words from the audio without reflection. सिर्फ इसलिए उस ऑप्शन को चूज नहीं करना बिकॉज आपने उसमें कुछ वर्ड सुना है रिकॉर्डिंग में, इट कैन बी इनकरेक्ट ऑल्सो. वो आपको ट्रिक करने के लिए भी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्टर भी हो सकता है. सो लिसन टू द कंप्लीट रिकॉर्डिंग. डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देन रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन जो आपने लेफ्ट आउट करा इन द लास्ट, राइट? इससे आपका अमाउंट ऑफ टाइम भी सेव होता है. अगर आप एक ही क्वेश्चन पे फोकस करोगे, रिकॉर्डिंग विल नेवर प्ले अगेन, राइट? रिकॉर्डिंग आपकी एक ही बार प्ले होती है, दोबारा प्ले नहीं होती. यू कांट हियर इट अगेन, राइट? नाउ व्हेन यू हियर वर्ड्स सच एज बट और हाउएवर, बी कॉशियस बिकॉज यहाँ पे स्पीकर कुछ ना कुछ अपनी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको बताने वाला है, राइट? नाउ सपोज आई से I'm going to take a class tomorrow, but however, I do not have a session. So that means मैं अपनी preceding statement से related आपको कुछ बताने वाली हूँ. So whenever you hear these words, but or however, that means वहाँ पे कुछ distractor होने वाला. Read the instructions properly. Remember, you're going to choose a letter. आपको हमेशा आंसर शीट में अपने लेटर्स को लिखना है, कंप्लीट एंटायर आंसर को नहीं लिखना, नॉट अ वर्ड. सो मेक श्योर, बी केयरफुल, जब भी आप आंसर को ट्रांसफर करो आंसर शीट पे तो आप लेटर्स लिखो. दैट मीन्स ए, ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर वो रोमन नंबर्स में हो या न्यूमेरिक नंबर्स हो, ठीक है? अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू आंसर. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन कि आपको अपनी क्या करनी है, इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज इट मल्टीपल चॉइस, इज इट मैप बेस्ड या एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी डन रीडिंग द 4 टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अगर आपको लगता है कि दैट योर आंसर इज करेक्ट, मार्क इट, बट कीप ऑन लिसनिंग टू द ऑडियो until you are sure about the answer. आपको लगता है कि A option is correct, so mark it in the question paper, but hear the recording completely. Maybe हो सकता है वहाँ पे distractor हो, right? Think of synonym and paraphrases of the main words you have heard in the recording, ताकि आपको right answer pick करने में help हो. Now, how to deal with multiple choice questions? We will look at step-by-step strategy. Any problems related to this common mistakes what you people make? Yes, please. Anyone? The common problems which we discussed just now. All clear? Okay. Yes, ma'am. Now let's look at step-by-step strategy. The very first strategy to deal with multiple choice question is you have to read the questions. Before the speaker start to talk, that means before the recording starts, read the question properly
it is important to understand what type of question you are going to answer. कि आपको कौन सा type of question मिला है, what type of multiple choice question is it, what sort of information पे आपको focus करना है. Identify करो अपने question type को कि ये short answer MCQ है, ये sentence completion है, या फिर ये list of questions है, ताकि आप कीप इन माइंड रख सको कि आपको आंसर कितने क्वेश्चंस करने हैं. अगर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर होगा सो मे बी आपको 2 और 3 आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. अगर शॉर्ट आंसर है दैट मीन्स आपको 1 आंसर फाइंड आउट करना है, राइट. सो ऑलवेज रीड योर क्वेश्चंस प्रायर, अंडरलाइन कर दो, क्वेश्चन के ऊपर लिख दो कि आपको 3 आंसर्स को फाइंड करना है और जस्ट 2 आंसर्स को फाइंड करना है, राइट. सेकेंड इज check the title. Sometimes a title will be given for the questions. So if you find it, उसको नोटिस करो, रीड करो. इससे आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझ आता है कि क्या टाइटल है ना. सपोज अगर आपको टेबल दिया है, टेबल के ऊपर आपको हमेशा हेडिंग मिलता है, या आपको फॉर्म फिलिंग दिया है तब भी आपको एक हेडिंग मिलता है. तो टाइटल को रीड करो, देन आप यू विल केम टू नो अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन आप हेयर करने वाले हो रिकॉर्डिंग में, अगर आपने टाइटल को ऑलवेज रीड करा है, राइट. Listening with intention can help you to absorb the required information. अगर आप intention के थ्रू, focus के थ्रू अपनी listening, अपनी recording को hear करोगे, then obviously आप required information को find out कर पाओगे, right? Next one, highlight or underline the keywords in the question. Figure out करो कि keywords कौन से हैं, किसको आपको अंडरलाइन करना है, किसको हाईलाइट करना है, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए राइट आंसर को चूज करने के लिए. कुछ सिनोनिम्स को जनरेट करो जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड हो. मोर अटेंशन पे करो अपनी रिकॉर्डिंग को जब भी आपको वो कीवर्ड सुनाई दे या उससे रिलेटेड कोई सिनोनिम सुनाई दे, बिकॉज आपने क्वेश्चंस को पहले से रीड करा है. And remember, you have very less time to read the question, so you have to be very quick. Then next is आप अपने questions को, अपने options को read करो. Think of the synonyms. Understand कि आपको same exact word नहीं मिलेगा कभी भी listening audio में. Expect कि आपको same meaning मिलेगा answer option का, but same complete option you will never get in the recording, right? So when you're listening to the recording, try to grasp the meaning. Meaning को समझो, right? Rather than picking the selected word. सिर्फ उस वर्ड को सिलेक्ट करने से आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स. वी ऑलरेडी डिड द कंप्लीट एंटायर सेशन ऑन डिस्ट्रैक्टर्स, राइट. हमने पूरा एक सेशन करा है कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं. कैन एनीवन टेल अस, द वन हु हैज अटेंडेड डिस्ट्रैक्टर्स सेशन, कोई बता सकता है कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? Ma'am, may I? Yes, Ayan, sorry. Yeah. Oh, so ma'am, when someone says in recording, yes, I book an appointment for Monday, and no, sorry, it's on Tuesday. So these are the distractors. So basically, this Monday is a distractor, and the correct answer is a Tuesday, right? Right. So when they Right. try to tell you something, but with some of the keywords or some of the phrases, they try to convey the preceding statement. तो वो क्या हो जाते हैं? Distractors हो जाते हैं. So in audio, they will use the distractor to challenge your English language skill, right? और distractors क्या होते हैं? वो words और phrases होते हैं जो change कर देते हैं या divert कर देते हैं या correct करते हैं information को, right? For example, a dog loves to play with human, but it could bite if someone hold its tail strenuously. Or an honest man could think of doing some immoral act when he is in difficult circumstances. However, his conscience does not allow him to do those acts. And a very general example given by Ayan also, right? So we have already discussed about distractors. अगर आपको कोई भी problem है distractors में, please go back and watch that session again, right? Next strategy is write the answer. Now, in multiple choice questions, answer will be in the letter form, not the words form. So, for example, if the right answer be gorilla, then you have to write an answer as B. आप पूरा word नहीं लिखोगे answer sheet पे gorilla, you will only write the letter B in your answer sheet. Okay. Next is make a guess. You will not get
any negative mark for the wrong answer. So instead of leaving it a blank या space, आप एक educated guess कर सकते हो, right? It is possible कि आपका guess answer correct हो जाए, right? So choose an option based on your understanding. Though you did not know the correct answer, आपको correct answer नहीं पता, but अपनी understanding के base पे आप एक guess answer करके option को choose कर सकते हो instead of writing a blank answer. Now let's do this. Are you all ready for this? Yes, ma'am. We'll do one practice test. So I'm giving you some time to read the questions carefully and then I'll start the audio. You have few seconds to read it. Try to differentiate between the options also. There are 3 options. See the instructions, choose the correct letter A to C. You have to write answers next to 35 to 40. These are 2 questions. Next I will show you later on. Try to differentiate between the different options A, B and C. See the A option well known and the B one is unknown. C is a first in the market. So try to differentiate. So when you hear the recording, you have to focus that it was well known, it was unknown, or it was a first in the market. So you may hear some of the different words, some of the synonyms or the paraphrase versions of these statements. Yes, are you all ready? Yes, please. Yes. Yes, ma'am. I'm playing the audio. Listen it carefully. Only coelacanth population in existence. Originally, it was a concern that the coelacanth might have a very limited range, and that overfishing along the Comoros Islands might wipe it out. However, scientists were amazed when, on July the 30th, 1998, an American scientist discovered a coelacanth population in Indonesia. Dr. Mark Erdmann was on a honeymoon trip to the area investigating a coral reef research site when he spotted a strange fish being wheeled into the fish market. He recognized the fish as a coelacanth and snapped a picture before it was sold. Dr. Erdmann's subsequent research revealed that the people from Sulawesi had a name for it: Raja, King of the Sea. The Sulawesi coelacanth colony is about 10,000 kilometers east of where the coelacanths were previously known to occur in the Western Indian Ocean. Both Sulawesi and Comoros coelacanths are quite different from all other living fish. But perhaps the most interesting feature of the coelacanth is that it has paired lobed fins, which move in a similar fashion to our arms and legs. Coelacanths also have an extra lobe on their tail and a vertebral column that is not fully developed. They are the only living animal to have a fully functional intercranial joint, a division that separates the ear and brain from the nasal organs and eye, and allows the front part of the head to be lifted when the fish is feeding. The brown Sulawesi coelacanth and the steel blue Comoros coelacanth share these unusual characteristics. The discovery of the coelacanth in 1938 is still considered. Did you get your answer? Yes. Yes, please. Ma'am, 35 का A, the well-known open resistant persona. And 36? 26.1. Yes, anyone who got the answer? Yes, Ayan, are you able to get your answers? Ma'am, 36, perhaps B. No, it was C, the color. Okay. And 35th was A, a well-known to Indonesian fisherman. Okay, let's do one more. Let's continue this.
Now read 37 to 40. Now see, they are going to talk about population. 360, 240, 80. So please hear it carefully. Now here they mention because. Because means they're giving you some of the reason. So please read the reason. Try to differentiate between the options and listen it carefully because paraphrasing मिलेगी. Done with the reading? We have only few seconds to read that. Because from the exam point of view, you will have only few seconds to read your questions 1 to 5 or 35 to 40. So I'm playing the audio. Please listen it carefully. The only coelacanth population. The Ancoras coelacanths are quite different from all other living fish. But perhaps the most interesting feature of the coelacanth is that it has paired lobed fins, which move in a similar fashion to our arms and legs. Coelacanths also have an extra lobe on their tail and a vertical column that is not fully developed. They are the only living animal to have a fully functional intercranial joint, a division that separates the ear and brain from the nasal organs and eye, and allows the front part of the head to be lifted when the fish is feeding. The brown Sulawesi coelacanth and the steel blue Comoros coelacanth share these unusual characteristics. The discovery of the coelacanth in 1938 is still considered to be the zoological find of the century. This living fossil comes from a lineage of fish that was thought to have been extinct since the time of the dinosaurs. Coelacanths are known from the fossil record dating back over 360 million years, and peaked in abundance about 240 million years ago. Before 1938, they were believed to have become extinct approximately 80 million years ago, after mysteriously disappearing from the fossil record. How could the coelacanth disappear for over 80 million years and then turn up alive and well in the 20th century? The answer seems to be that fossil coelacanths appeared to live in environments with clay sedimentation with plenty of volcanic activity. Modern coelacanths, both in the Comoros and Sulawesi, inhabit caves and overhangs in vertical marine reefs at about 200 meters, environments not conducive to fossil creation. In 1991, scientists got a better understanding of the fish when the Comoros got their independence from France and French restrictions on research were lifted. This allowed scientists to study the fish off the Comoros Islands. As the animal hides in underwater caves some 300 to 700 feet down during the day and comes out at night to feed, diving is not an option, and previously only fishermen specimens had been available for study. But this time, the scientists had their own submarine, so they could study the coelacanth in its natural habitat through portholes. That is the end of section 4. We will now. So did you got all your answers? Yes, please. What is 37? 37 is B, ma'am. 240 million years. Okay. Okay, you can check your answers. 35 was A. 36 was C. 37 was 240, right? Because he mentioned about extend part, right?
Then 38 was B, conditions where they live were not favorable for fossilization. 39th was A and 40th was B. Anyone who got all correct? Yes, Jyoti? Ma'am, I have got in the four, three is correct, one is wrong. 40. Okay. So out of total, there was 6 questions. So 6 में से you got 3 correct? 4 correct. Two got 2 wrong. incorrect. And what about others? Ayan, Surbhi? Same. 2 incorrect and 4 correct. What about you, Ayan? Ma'am, 3 correct, 3 wrong. Okay, try to focus. Okay, this is section 4. So section 4, you know, because here you will be hearing the academic context, right? So please focus on this part. Now let's do map and plan labeling questions. Now, what are map and plan labeling question? In this, you need to label the map with the correct letter for the question. And how you're going to label? By listening to the audio, listening to the recording part. And there will be questions where you need to label the unnamed area. आपको unnamed area मिलेंगे, आप here करोगे recording को, and then you will find out that which place is this. Pattern of the map and plan labeling questions will be similar. They all are similar. Where in plan आपको need to label करना होता है building को, and in the map में आपको क्या करना होता है, town को label करना होता है, right? So let's look at the sample also. हम दोनों का sample देखते हैं. See this. This is map labeling question. आपको nursery, native tree zone, exotic forest zone, exhibition, Shemania, topiary display. These are 6 things. आपको इन 6 places को क्या करना है, label करना है यहाँ पे. So you have to label the map, write the correct letter A to K. आपको यहाँ पे A to K mention करना है, which is A. A क्या है, B क्या है, उस place का name क्या है, right? You need to write only the letters. आपको सिर्फ A to K लिखना है अपने answer sheet में, not the nursery, not the native tree zone. So this is map based question. How you gonna do? You have to follow some instructions while listening to the recording. Let's see this also. This is a map again. आपको इसमें क्या करना है? See, यहाँ पे आपको alphabetical order में questions दिए हैं. और क्वेश्चंस आपके मेंशन है मैप में, ऑप्शंस आपको अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं A to H की फॉर्म में. सो अगेन आपको लेटर्स को ही अपनी आंसर शीट में लिखना है, 1 2 3 को नहीं लिखना आंसर शीट में, राइट? दिस इज अ प्लान. ये प्लान लेबलिंग है. You have to choose 5 answers from the box and write the correct letter A to I next to the question. Questions आपको यहाँ given है 11, 12, 13, 14, 15. आपको यहाँ से क्या करना है, letters को choose करके यहाँ put down करना है. ये a kind of a plan labeling question. So आप recording को सुनोगे. Recording is a librarian जो explain कर रही है different departments of library. This is a map. This is a plan of a library, town library, right? Now, how you're going to do that? Some of the listening map labeling tips is, first is instructions are the key. सबसे पहले आपको क्या identify करना है? The way you're going to respond to the listening map. कैसे आप respond करोगे? पहले आप instructions को क्या करोगे? Read करोगे. From the instructions आपको clearly ये पता चल जाएगा कि आपको कितने words लिखने हैं या कितने kind of words का ये question है. One thing is कि आपको हमेशा instructions में पता लगेगा आपको letters ही लिखने हैं. 99% आपको सिर्फ letters लिखने होते हैं. 1% is a chance कि आपके पास कुछ और आ जाए option लिखने को, but 99% is कि आपको हमेशा letters मिलेंगे. So आपको instructions को बहुत carefully read करना है, because sometimes questions जो होते हैं वो map या plan के अंदर होते हैं और sometimes it is outside. जैसे हमने sample में देखा, see questions कहाँ है, inside है, letters आपके यहाँ पर mention. But in this question देखो questions यहाँ पर आपको given है और यहाँ पे सिर्फ आपको alphabets दिए.
सो मेक श्योर कि आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ो कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, राइट द करेक्ट लेटर A to K नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस 1 to 6. तो यहाँ पे आपको लेबल करना है क्वेश्चंस को विथ A to K, नॉट विद द आंसर्स जो आप हेयर करने वाले हो रिकॉर्डिंग में. आपको सिर्फ लेटर्स लिखने हैं. फोकस ऑन द लेबल्ड पार्ट. जो ऑलरेडी लेबल पार्ट्स हैं उन पे फोकस करो. वो काइंड ऑफ आपके लिए लैंडमार्क्स की हेल्प करते हैं. टाइटल क्या है, लेबल पार्ट्स क्या है आपके मैप में या प्लान में, वो की एस्पेक्ट है, बिकॉज वो आपको आंसर करने वाले हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, क्या आप हेयर करने वाले हो, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लिसन, और कैसे आप फाइंड करोगे आंसर्स को. तो वो आपकी इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. वो काइंड ऑफ लैंडमार्क्स होते हैं. Put yourself in that map or plan. Just imagine कि आप खुद हो उस मैप में, उस प्लान में. इमेजिन करो कि आप इस प्लेस में हो और फिगर आउट करो कि व्हाट ऑल प्लेसेस जो आपके आसपास है आपको लोकेट करने हैं वो सारे. यू कैन स्टार्ट बाय प्रिडिक्टिंग. आप प्रिडिक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हो कि पर्सन कहाँ से स्टार्ट करेगा. व्हाट कैन बी द प्लेस दैट आर इन द राइट. राइट में कौन सा प्लेस है, लेफ्ट में कौन सा है, फ्रंट कौन सा है, बिहाइंड कौन सा है. रिलेट करो अपनी प्रिडिक्शंस को क्वेश्चंस के साथ. फोकस करो आंसर पे. रिकॉर्डिंग विल कैरी इंफॉर्मेशन वेयर यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर इन ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? लिसनिंग में सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इट इज ऑलवेज इन सीक्वेंस. सो हमेशा आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर मिलेगा, देन क्वेश्चन 2 का. सो फोकस ऑन दिस पार्ट. And there always an entry and exit also. Sometimes आपको entry and exit का भी उसमें mention होता है कि that the person is standing here and now he will move straight or he will move left. Neglect the distractors. There is no such thing that you will get the answers so directly in the recording. Sometimes आपका answer जिसे आप ढूंढ रहे होते हो, speaker might use distractor word. वो डिस्ट्रैक्टर वर्ड यूज कर देते. सो कंटिन्यू रखो अपने सेंटेंस को, वहां पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. वर्ड्स जैसे कि अभी मैंने बताए, बट, हाउएवर, नो, सॉरी, दीज आर द डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड्स जो आपको केयरफुली लिसन करने हैं अपने ऑडियो में, बिकॉज इसके बाद आपको करेक्ट आंसर मिलेगा और समटाइम्स इससे पहले भी आपको करेक्ट मिल सकता है. नोट टेकिंग. यू आर अलाउड टू टेक नोट्स ऑन द क्वेश्चन पेपर. आप जॉट डाउन कर सकते हो की पॉइंट्स को जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है. मेक श्योर कि जो नोट्स आप लिख रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, राइट? बहुत ज्यादा लेंदियर सेंटेंसेस में डिस्क्राइब नहीं करना. नोट टेकिंग स्किल्स इज जस्ट लिटिल नोट्स, एब्रीविएशंस के साथ आप हेल्प कर सकते हो, बट बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स नहीं. ट्रांसफरिंग आंसर्स. टाइम आपको दिया जाता है 10 मिनट्स का ट्रांसफर करने के लिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. सो मेक श्योर कि आप करेक्ट स्पेलिंग लिखो और जो भी आप लेटर्स फाइंड आउट कर रहे हो डायरेक्शंस के थ्रू, जो भी लोकेशंस है, जो भी लेटर आप लिख रहे हो, वो आप केयरफुली लिखो और वो करेक्ट लिखो. अगर आपने वो इनकरेक्ट लिखा, सो ऑब्वियसली यू गोना लूज योर मार्क्स, राइट? सो मेक श्योर कि आप कैपिटल लेटर्स का ही यूज करो, स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करो. Synonyms. After predicting the possible answer for the question, you need not to only focus on exact answer कि आपको exact answer क्या मिलेगा. Focus करो synonym पे. आपको similar words नहीं मिलेंगे. If your answer you're looking for is books, so maybe हो सकता है कि speaker वहाँ पे कुछ और word use करे like study resource, study material. So try to think of the synonym कि क्या possibility हो सकती है इस keyword की. लिसनिंग मैप वोकैबुलरी देखते हैं. वोकैबुलरी इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया. एक मार्किंग क्राइटेरिया है आपका. सी दिस एट द टॉप, एट द बॉटम, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द फार साइड. ये सब वोकैबुलरी आपकी यूज होती है मैप बेस्ड में. टू द नॉर्थ, टू द वेस्ट, स्लाइटली वेस्ट, स्लाइटली heading west, just southeast, in the southwest, in the middle, above, inside, outside, dead end, left hand side, right hand side, clockwise, anti-clockwise. So just read all these vocabulary because ये सब the speaker will use to guide you with the directions. And if you're not aware of what is south, west, east, north, please make sure this is north, this is south, this is west, and this is east. So please ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी you are able to locate. अगर आप इस चीज में confused रहते हो directions में, make sure कि आप map को हमेशा draw करके रखो.
whenever you find any map or plan labeling question, वहां पे पास में कई बार आपको मैप ऑलरेडी ड्रॉ भी मिलता है, बट अगर आपको नहीं मिला क्वेश्चन पेपर में, यू कैन ड्रॉ इट. Okay, now let's do one exercise. Okay, everyone, please listen to the recording carefully. I'm starting this recording, and you have to find out the answer for these 6 places. You have to locate that which place is A, which is B, C. Now see, entrance is here. यहाँ पे already marked है, entrance का है यहाँ पर. So he will move from this part. Okay, shall I start the recording? Yes, ma'am. Okay. Oh. Give me a second. So sorry, there's a little difficulty in playing the audio. Just have a look at this and you can practice from our application, right? There are lots of multiple choice questions. They're already there. I'm going to repair this and then we can play it tomorrow again. Okay, but I hope you got an idea that how you're supposed to follow the instructions for the map and plan labeling questions, right? You have to follow the instructions. The speaker will always guide you with the entrance part. This is the entrance, and then he will guide you where is the nursery, because nursery is the question 1. So he will guide you where you can find the nursery. Then next he will guide you with the native tree zone, that where is the native tree zone. He will always guide you with instruction, these questions part. And in this he will guide you what is the 11th one. Now this is entrance, 11th one. Then he will guide you with this place, this is 12th, then 13th, then 14th and 15th. So always follow the numeric version. है ना, आपको न्यूमरल्स को फॉलो करना है, बिकॉज नंबर में ही आपके क्वेश्चंस होते हैं ऑलवेज, राइट? So Ma'am, I I have a question. Yes, Yan. So, ma'am, they always the audio is always going in a sequence, right? Yes, Not in always. a. Yes, Okay. always. It will always be in sequence. You have to follow the numbering because the questions are in number form, right? Whether questions Okay. will be here or questions will be available in the plan, but you have to follow the questions. Now, see, in the plan, the questions are in this plan format 11, 12, 13, 14, 15. And in the previous one, questions are here. So he will guide you where is nursery. Nursery can be the B part, he will explain you, or it can be the A part just behind the office or in front of the office, right? You are here. Okay. So I hope now you got an idea.